Okay, fine. Now second step is we have to see this second step is very important. Please try to understand this. You have to add the substance, internal substance to standard सैंपल एंड द ब्लैक. तो हमें क्या करना है, जो इंटरनल स्टैंडर्ड है फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड इज एडेड इन स्टैंडर्ड एज वेल एज इन द सैंपल. ब्लैंक का छोड़ दो. ओके, तो हर एक में हमें इंटरनल स्टैंडर्ड ऐड करना है. तो हमें क्या कौन सा सोल्यूशन मिला है, देखो वी गॉट इंटरनल स्टैंडर्ड एक है हमारे पास, देन इंटरनल स्टैंडर्ड प्लस सैंपल. करेक्ट, जो हमने इंटरनल स्टैंडर्ड सैंपल में डाला है उसको हम बोलेंगे AAX. ओके, एंड वी गेट द स्टैंडर्ड प्लस इंटरनल स्टैंडर्ड AA. ओके, सो दिस इज वी गेट द थ्री सॉल्यूशंस. ओके, देन हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी मेजर करेंगे. किसका किसका मेजर करेंगे, एक तो इंटरनल स्टैंडर्ड का मेजर करेंगे, देन विल मेजर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड प्लस सैंपल का. सो उसको हम बोलेंगे AAX. ये सैंपल है इसलिए X लिखा है, इंटरनल स्टैंडर्ड प्लस सैंपल इसलिए हम उसको एनालाइट बोलते हैं, और A स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन. एंड स्टैंडर्ड का मेजर करेंगे उसको हम AA बोलेंगे. A स्टैंडर्ड प्लस इंटरनल स्टैंडर्ड उसको हम बोलेंगे एनालाइट, एंड A स्टैंड फॉर absorbance. So this is, they will measure absorption for three: internal standard, sample plus internal standard, and standard plus internal standard. तो हमें तीन मिलेगा. इंटरनल स्टैंडर्ड के एब्जॉर्प्शन को हम बोलेंगे AI, I फॉर इंटरनल स्टैंडर्ड, A फॉर एब्जॉर्बेंस. देन इंटरनल स्टैंडर्ड प्लस सैंपल, सो हम उसको एनालाइट बोलेंगे, एब्जॉर्बेंस ऑफ एनालाइट, सिंस इट इज अ सैंपल सो हम X को X बोलेंगे. और इंटरनल स्टैंडर्ड प्लस स्टैंडर्ड उसको हम एनालाइट बोलेंगे, इस एब्जॉर्बेंस ऑफ एनालाइट. हम क्या करेंगे अभी इसका, ये हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा 4-5 रहेगा, तो हमें ये 4-5 वैल्यू मिलेगा. सो इसको हर एक वैल्यू को हम इंटरनल स्टैंडर्ड के एब्जॉर्प्शन से डिवाइड करेंगे. सो हमें मिलेगा द रेशियो ऑफ AA upon AI. AA means absorbance of analyte and AI is the absorbance of internal standard. वैसे ही हम क्या करेंगे, AAX दैट इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल होगा, उसको हम एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल प्लस इंटरनल स्टैंडर्ड होगा, उसको हम इंटरनल एब्जॉर्बेंस ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड से डिवाइड करेंगे, तो हमें ये मिलेगा. सो AA अपॉन AI, X स्टैंड फॉर सैंपल. सो हम क्या करेंगे, इसका ये हमारे पास 4-5 वैल्यू रहेगा, तो इससे हम ग्राफ निकालेंगे AA अपॉन AI against the concentration, will get a straight line passing through the region. और फिर बाद में हमने ये फाइंड आउट किया है, with the help of this value we will find out the corresponding concentration, that will be the concentration of unknown. So I think this is clear. If this method is clear, you write down yes in the, and then we'll go ahead. Please write down yes if this is clear, then I will go ahead. Okay, now concept is clear, I can move ahead. Okay, thank you. Okay, next. नाउ लिमिटेशन. देखो इसके लिमिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो हम लिमिटेशन देखेंगे. पहला लिमिटेशन है, सेपरेट लैंप इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट. हर एक एलिमेंट का एनालिसिस करने के लिए हमने पहले ही पढ़ा था कि कैथोड कब लगता है हमें. अगर हमें निकल का एनालिसिस करना है तो निकल का कब लगेगा, अगर गोल्ड का एनालिसिस करना है तो गोल्ड का कब लगेगा. सो separate lamp is required, that is the major drawback of this method. The second one is the element like aluminum, tungsten form the stable refractory oxides in the flame में वो अगर उसको burn किया जाएगा तो stable refractory oxides मिलता है, and these oxides can be dissociated, can be dissolved by using nitrous oxide and acetylene flame, but you require the different flame, so that is the drawback of this method. Then third, the presence of phosphate in the solution. अगर calcium and magnesium have tendency to form a stable phosphate complex, so that is going to, phosphate ions are going to interfere in the analysis of calcium and magnesium, which can be overcome by adding lanthanum or thorium,
which preferably or preferentially form the complex with phosphate ion, so interference can be removed. So that is the third drawback. Fourth one is, agar if two elements absorbs at the same wavelength, for example manganese and gallium, which absorbs at 403.3 nanometer, such interference can be removed by separating from each other. So that is the fourth drawback. Fifth drawback, solvent role. See, aqueous solvent, if the element in the aqueous solvent, it is difficult to ionize, and the element in the non-aqueous solvent, it is very easy to ionize. So absorbance is less in the aqueous medium, then, and it reduces the intensity. And the last, that the element which are having low ionization potential like sodium, potassium get ionized, and because of that it reduces the intensity. It can be avoided by using the moderate flame temperature. So these are the 5/6 what to say limitations of the method. The next method is advantages. Both the technique is very specific because particular element absorbs its characteristics wavelength. So बहुत स्पेसिफिक टेक्निक है, हमने पहले ही पढ़ा है कि हमें सेपरेट लैंप इज रिक्वायर्ड, फिर निकल का लैंप लगेगा तो निकल ही एनालाइज होगा, बाकी कोई एलिमेंट एनालाइज नहीं होगा. So मेथड इज वेरी स्पेसिफिक. Okay, and large number of atoms remains in the ground state, so the temperature does not affect the absorption. That is the very important. And AAS is more sensitive for boron, silver, bismuth, cadmium, cobalt, etc. Comparison between FES and AAS. So let us see AAS and FES comparison. See, in the AAS, we know that the majority of atoms remain in the ground state and they absorb their characteristics wavelength. So, flame temperature, flame does not affect the AAS or absorption. Yeah, most of the metal atoms get excited. So, few atoms get excited and they re-emit the characteristic radiation when they return back to their original state. So, emission intensity depends upon the flame temperature. Absorption of the light depends upon the number of atoms in the ground state. Absorption depends upon the number of atoms excited, so it depends upon the flame rate. And Beer's-Lambert's law is obeyed here. Beer's-Lambert's law is not obeyed. So this is the comparison between FES and AAS. And this is the end of the, what is it, AAS and FES. Okay, just wait, I will take your attendance and then we will stop here.